गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ଇକ୍ୟୁ ଓପିସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ହେଉଛି 9th ଜୁଲାଇ ସୋ ସରି ଫର୍ ଦ extremely sorry in fact for the delay due to this strike I got stuck in the traffic so ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ସେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି with certain demands. चलो start करियो. आज न्यूज होची EV इलेक्ट्रिक व्हीकल विषय डिस्कस करियो ऑटो इंडस्ट्री लर्निंग आउटकम FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हॉर्नबिल Indo-US ट्रेड डील. सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल को नेकी overall EV sales increased 28.6% year on year reaching 1,80,238 units in June 2025. Segment wise breakdown जदि आपण देखिबे इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल EV/PVs sales jumped to 79.95% from 7,323 units in June 24 to 13,178 units in June 25. Market share rose from 2.5% to 4.5% overall EV sales. Electric two-wheelers sales climbed to 31.7% from 80,003 to 1,05,335 units. Their share in total two-wheeler sales rose to 7.3%. Electric three-wheelers यदि आपण देखिबे grew 15.8% with 60,559 units sold and segment constituting 60.2% of all three-wheeler sales. Electric commercial vehicles surpassed 1,146 units, a robust 122.5% year on year increase. Okay, so किसी data अपन कर देइची जे electric vehicle रो consumption यानी कि sell हमारा increase है year on year. Significance कौन देखिए upswing in the adoption, that means people have started adopting this EVs को adopt करिवा start करी सरलेनी. The data underscores rising consumer trust and policy support. दुईटी जगह अच्छी सप्लाई साइड रो भी अच्छी पॉलिसी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट एंड डिमांड साइड रे भी देखिबे द पीपल्स ट्रस्ट ऑन द EV vehicle especially via the PM E-Drive scheme for the EVs. Diversified growth expansion across personal commercial public transport segments shows broad based adoption not limited to two wheelers. तबे केवल two wheelers नुहे बर्तन पैसेंजर भी आपण देखि सरीबनी प्लस कमर्शियल व्हीकल्स भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कारण जो बसेस आपण देखिबे से गुडी को EVs या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गुडी को चली छी. Policy impact and infrastructure push. The surge reflects enhanced charging networks, fiscal incentive, यानी कि subsidies or financial incentive given by the government, domestic manufacturing momentum, etc. Climate and energy goals यदि आपण देखिबे, this growth aligns with India's net zero target by 2070. To 2070 रे we have targeted that the net zero emission. Okay, तो सेटा को हमें follow करूछु at that target. We are moving towards that to reduce oil dependency and urban pollution को भी rectify करा जाई पारिबो. Challenges कौन होची? Inadequate charging infrastructure, slow EV adoption in tier 2, tier 3 cities due to lack of public charging stations. In fact, जदि आपण cities रो टिके sub urban area या rural area को move करूचन, so I mean the charging infrastructure should be there, must be there. So that is one factor जोटा की restricting the larger segments or larger section of consumerism of these EVs. Limited interoperability across different EV brands and chargers. That means जिमते हमें फोन रे हमें कौन कुछ C type charger जदि अच्छी तबे universal charging ही जाउची. तो सेथरे कौन होबा आपन करे e-waste को भी कम करा जाई परिबो प्लस acceptability बढ़िबो among the consumers. So similar kind of things must be or universal charging system charging point जदि रहिबो तबे आपन कोठी में मूव करूचंदी जे कोनोसी ब्रांड रो गुटे चार्जिंग स्टेशन अछि देखि you can go for the charging of that EV. Battery supply chain constraint. India relies heavily on import of lithium, cobalt and nickel, key raw materials. In fact, जदि आपण देखिबे ए जो हमें काली भी डिस्कस करथले करंट अफेयर्स रे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स अछि तार भी कोठी ना कोठी इंपोर्ट इंडिया को कमी छि सेत पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज पर्टिकुलरली सफरिंग. सो लैक ऑफ बैटरी रिसाइक्लिंग इकोसिस्टम रेज सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट कंसर्न. ऑब्वियसली जदि रिसाइकल ही परिबो बैटरी तन ऑब्वियसली कॉस्ट विल कम डाउन. जदि every time you will construct or build a new battery system, definitely it includes lot of cost. High initial cost यदि आपण देखिबे despite subsidies, EVs are still costlier than IC internal combustion engine जोटा कि normal हमरो petrol and diesel engine हमें कहूचे.
Affordability remains a barrier, especially the two-wheeler and commercial segment. Affordability because of this high cost. Low domestic manufacturing capacity. India still depend on China and other countries for critical EV components like motors, semiconductor and batteries. So still we are depending on the China, and as you know, China ru import kariba kete easy and China ru kete import kariba kete convenient. So delayed progress on the battery cell giga factories despite production linked incentive scheme. So domestic manufacturing jadi ଆପଣଙ୍କର increase ବଢ଼ିବ ଯଦିଓ we are trying to achieve that semiconductor ecosystem ଆମେ ଗୋଟେ build କରୁଛୁ ଆମ domestic economy ରେ, but that is taking lot of time. So range anxiety and tech skepticism. Many users fear limited range, that means only 250 km 200 km तार भितर आपनको पूर्ण तरह रिचार्ज କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. Charging delays especially for the long distance travel. तो ଯଦି ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା. ନାଉ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ବି ଆସିଲା. ସୋ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଭିଜ୍ ରେ ବି ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍. ସୋ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ reluctant ଅଛୁ. ମିସକନସେପସନ୍ अबाउट ବ୍ୟାଟେରୀ डिग्रेडेशन एंड रीसेल वैल्यू हिंडर वाइडर एक्सेप्टेंस. ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫୋନ ର ବ୍ୟାଟେରୀ 100% ଚାର୍ଜ कैपेसिटी थिबो, ग्रेजुअली डाउन हे जिवो 80% चार्ज कैपेसिटी 70% चार्ज कैपेसिटी. सो जोटा का हमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोले कहूचे, डेप्रिशिएशन बोले कहूचे, वेयर एंड टियर. तो सिमिलर काइंड ऑफ जदी बैटरी डिग्रेडेशन होइबो, डेफिनेटली बैटरी इज काफी एक्सपेंसिव और कॉस्टलियर इन द ईवी सेगमेंट. तो सेत पई इटा भी गोटे मिसकनसेप्शन जोटा स्प्रेड होउची, सेटा भी गोटे कंज्यूमरिज्म को हिंडर करूची. आफ्टर सेल सर्विस डेफिशिएंट, लो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ईवी मैकेनिक्स एंड स्पेयर्स. कारण आपण सीधा को सीधा मोटर ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀज ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି सीधा सीधा ଚାଇନାରୁ, ମୋଷ୍ଟଲି ଦ ଚାଇନାରୁ ଆଣ୍ଡ अदर कंट्रीज. तो से एक्सपर्ट्स एंड मेकानिक्स भी आमर दरकार जो माने कि खास करके टू व्हीलर ई रिक्शा ये सब जिनस गुड़िक चली जमती रिपेयर करा जाई परिबो इमीडिएटली. नेक्स्ट देखिबा ऑटो इंडस्ट्री. ऑटो पार्ट इंडस्ट्री 6 नेशनल स्ट्रेटजी ऑन क्रिटिकल मिनरल्स. चाइना's export curves on rare earth magnets key for EV motors, sensors, advanced auto parts have exposed India's scrap vulnerability. ओके तो ऑटो इंडस्ट्री आपण देखिबे ऑटो इंडस्ट्री रे बहुत लंबा आपनकर ड्यूरेशन थाए डिलीवरी. आपण सपोज आज यदि गाड़ी बुक करछन यू विल गेट द व्हीकल 10 months 8 months. तो इट्स नॉट लाइक लॉट ऑफ डिमांड फॉर दैट व्हीकल ड्यू टू द सप्लाई फैक्टर. कारण मोस्ट ऑफ द केसेस जेमति एबे देखिबे आगुरु गाड़ी गुडी को काफी रॉ गाड़ी थिला. रॉ गाड़ी इन द सेंस की डिजिटल केवल इंजिन थिला, डिजिटल रो सते यूज नथिला, स्टिल वेरी बेसिक मोटर थ्रू रे चालुथिला. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट काफी इंक्रीज हेई ची गाड़ी गुडी करा, प्लस ईवी व्हीकल गुडी का हम प्रोड्यूस करू छे. सो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट इंक्रीज हेई ची माने ईवी मोटर सेंसर ये जिनस गुड़िकर भी यूजिबिलिटी बढ़ी, यूसेज बढ़ी. सो दैट इज द रीजन रेयर अर्थ मैग्नेट्स ऊपर हमें डिपेंड कर. विथ इंडिया इंपोर्टिंग ओवर 53,000 मेट्रिक टन्स ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स इन फाइनेंशियल ईयर 25, डोमेस्टिक बफर स्टॉक्स आर ड्वेंडलिंग. डोमेस्टिक बफर स्टॉक्स इन द सेंस अपन देखिए कोविड टाइम रे भी एक्जैक्टली वी फेस द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन. चाइना रु जेहेतु लॉकडाउन एंड रेस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट चाइना रु इंपोर्ट हवा जिनस काफी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन. इनफैक्ट किसी समय पे बंद भी जाइतिला. सिंपल आपण से टाइम रे देखिबे टीवी भी आपण को मार्केट रे मिलु नथला. टीवी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होम अप्लायंसेस गुडी को अछि. The auto component sector has doubled since financial year 20, registering a turnover of $8.2 billion in financial year 25. Despite burgeoning 8% trade surplus, rare earth material scarcity threatens future growth, notable in the EV segment. So, especially जो affect होगा सेटा EV segment ही affect होगा because of this deficit in the import of those rare earth elements. Why REM shortage matter? Rare earth magnets are essential for the traction motor, e-axles, sensors and other EV components. Okay, मुझे जमती कहली अपन को जेते इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट काफी इंक्रीज हेलानी. इनफैक्ट नॉर्मल पेट्रोल डीजल व्हीकल रे भी अपन देखिबे पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट चेंज हेलानी. तो इलेक्ट्रॉनिक जेहेतु यूसेज बॉडी बॉडी चली तेणु यार भी इंपोर्टेंस बॉडी बॉडी चली. China processes 90% of the global REMs. Any export control directly impacts India's EV roadmap. Okay, so जेहेतु China is almost
90% ग्लोबल रेयर अर्थ मटेरियल्स को कंट्रोल करूची और दैट मीन द सप्लाई चेन तो से इंडिया इज नाउ एक्सप्लोरिंग द रिजर्व इन आई मीन इन इंडिया इनफैक्ट जदि रेयर अर्थ मटेरियल्स किसी रिजर्व हमको मिल जाए डेफिनेटली आमर जो इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्री आम सेल्फ रिलायंस जो आत्मनिर्भरता को टार्गेट करूचे दैट वी कैन अचीव इजिली इंडस्ट्री डिमांड्स ए नेशनल स्ट्रैटेजी सिक्योर डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन तो हमको कौन एक्जैक्टली करने को पड़ो वी नीड टू diversify our import basket. So China सहित we have to explore other partners like Australia, Africa and Central Asia where we can easily import those rare earth materials. Fiscal incentive for the homegrown processing units, at least subsidies हो या any such financial incentives should be given to those industries जो माने कि ये segment actually काम करुचन so that on their risk they would play a significant role in the supply chain of this EV segment. Okay. Strategic stockpiling and recycling, government-backed stockpiling programs aligned with National Critical Mineral Mission. National Critical Mineral Mission जदि आपण देखिबे ये आपण को देखिबा मिलियो पुश फॉर REMs recycling and circular economy measures. Circular economy measures in the sense कि जो पुराना जिनस अछि ताको केमते रिसाइकल करी कि ताको पुणी थरे रीयूज केपेबल करि परिबा कारण रिसाइकल जदि हमें करूचे ऑब्वियसली एक तो डिपेंडेंसी हमर कमिबो कॉस्ट इफेक्टिव हेई परिबो कंज्यूमर फ्रेंडली भी हेई परिबो ओके Policy coherence and fast-track approvals make REMs part of critical mineral policy, streamline domestic approval and research and development. Absolutely correct. कारण जो rare earth materials elements गुड़ी को अच्छी, यदि हमें तको critical mineral policy रे include करेगा, definitely तारो हमें तारो survey या excavation यदि site कोठी अच्छी, ये सब जगह रे हमको easily हमें domestic approval plus research and development ये सब जिनसे भी easily ही परियो. Government steps already in motion. Government steps देखो National Critical Mineral Mission सरकार launch करी approved in January 2025 focusing on exploration, processing and recycling of this rare earth materials or critical minerals. Incentive scheme being drafted by the heavy industries and corporate led efforts for the domestic rare earth material manufacturing. Okay, तो incentive schemes भी हमें ताको implement करूँ. Moving to the next, learning outcome देखिबा key findings from the recent learning survey. But learning survey अपन कर हितला country wide survey reveals deficit in the student learning. Foundational gap, less than 60% of the class 3 students can perform 2-digit addition and subtraction. 2-digit विशिष्ट जो मिश्रण फेडाना में कोना addition and subtraction. Only 50% of the class 6 students recognize basic number pattern. By class 9, just 28% understand percentage. Percentage टिकु बुझंदी को माने जो माने class 9 रे पढ़ुचंदी class 9 रे पहुंची चंदी एवं समान का भितर only 28%. 72% किछि जानते नहीं कि percentage कौन. Learning poverty. Over half of the 10-year-old in India are unable to read a basic text. 75 to 78% fall into this category. Okay. Desk to dropout leakage. While primary and lower secondary enrollment is near universal, primary and lower secondary only because of अपना मिड डे मील कहि परिबे एवं obviously child labor इसु जेहेतु बैन अछि तो घरे बसी की पिला कोन करबे चलो स्कूल को जीवा राइट तो गवर्नमेंट रे जो इनिशिएटिव भी अच्छी मिड डे मील हो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को नहीं हो upper level secondary and tertiary lack significantly and dropout rates are high because once a child reaches at the age of अपन कोई परिबे 12 13 पहुंचला परे इमीडिएटली ताको तो पेरेंट्स को कोच भाई तू काम रे काम स्टार्ट कर दे पढ़िबा दरकार नै सो दिस इज व्हाट दैट इज द रीजन यू विल फाइंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी या अपर लेवल सेकेंडरी टर्शियरी रे आपण ड्रॉप आउट रेट अधिक देखिबे स्कूल न जाय कि दे आर एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ वर्क बट ताठू कम रे आपण देखिबे दे आर एंगेज्ड इन द स्कूल सो ड्रॉप आउट रेट कम अछि एंड एनरोलमेंट यूनिवर्सल ऑलमोस्ट Teacher and infrastructure challenges. Nearly 1 million teaching positions remain vacant. Many educators lack subject qualification. तो जो educators के maths पढ़ूची के science पढ़ूची, they do not have subject qualification. यानी कि जो minimum qualification दरकार, they do not have. Infrastructure, electricity, toilets, libraries remains inconsistent. Okay. New education policy initiative slowly taking root. Foundational literacy efforts, that is Nipun Bharat. So early gains in class 3 through broader improvements remain slow. So
न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आमर आसी 2020 तो ताको आम इम्प्लीमेंट करूँ सो इट विल टेक टाइम ग्लोबल रैंकिंग कंसर्न भी देखिए SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 कौन कहूँ once India off track on quality education despite gains in enrollment. We have only achieved the enrollment, okay, but quality education जदि देखिए India is still behind. Okay, देखो foundational literacy कौन prioritize this foundational literacy through Nipun by 2025 Nipun scheme अनुसार teacher training and staffing recruit and train quality educators infrastructure deficit boost investment towards new education policy as 6% of GDP goal focus beyond enrollment shift priorities from access to outcome that means आमे केवल enrollment हेले हबो नै learning outcome quality of the education must be improved equity lens target intervention in the lagging regions यानी कि जो backward regions गुडी को जो जगह percentage काफी low से जगह को हमको target करबा को पड़ियो ये सर्वे स्नैपशॉट जदि देखिबे ये होची परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण was conducted December 4 2024 covering 21,022 students from both government private schools in grade 3 6 and 9 Punjab Himachal Kerala Dadra Nagar Haveli Daman Diu and Chandigarh the best performance in the school education Kendriya Vidyalayas recorded the lowest in class 6 government aided and state government schools showed poor performance in mathematics class 9 Kendriya Vidyalaya students performed the best across the all subjects okay FATF देखिए terror attack accused in India used online payment services e-commerce sites FATF Financial Action Task Force The Financial Action Task Force recently highlighted growing misuse of digital platforms जेमती हमरो Flipkart Amazon से there are multiple digital platforms e-commerce websites they are misused e-commerce sites online payment services like PayPal VPNs and social media based crowdfunding by terrorists to raise move funds and procure operational materials तो easily से माने crowd fund ना रे suppose कही परंती भाई कि hospitalize अच्छी तानारे case तानारे हमें crowd funding करू चाहिए we need to help someone तो crowd funding हो जी से funding actually for wrong purpose हो जी and they are collecting fund and procuring those required operational materials important case studies from India Pulwama attack February 2019 aluminum powder used in IED that killed 40 CRPF personnel was procured from an e-commerce platform like Amazon. Amazon भली गोटे e-commerce platform थिला जोटु कि से माने purchase करथिले बहुत famous नो है but still they are selling it. Gorakhnath temple attack April 2022 the attackers transferred 6.7 lakh overseas via PayPal using VPNs to conceal tracks and fund ISIL operatives. FATF's warning and recommendation urges government and fintech, जो financial tech companies strengthen oversight of e-commerce, payment services, VPNs and crowdfunding platforms. तो एकटा को टिके tightening करिवे, filter out करिवा पई सरकार को कुहा जाउची. Calls for better regulation, data sharing and dictation systems across private and public sectors. तो authentify करिवा को पड़िवा आपन को. Acha, Financial Action Task Force is an intergovernmental policy-making body established in 1989 by the G7 summit in Paris. Its primary role is to develop policies to combat money laundering, terrorist financing, and other threats to the integrity of the international financial system. Okay, so this is what FATF from main objective terrorist financing money laundering एटाको combat करेगा headquarter देखिए Paris France members 40 member countries including India joined in 2010 two regional organization European Commission and Gulf Cooperation Council be member FATF style regional bodies that is expand its global influence key objective कौन देखो set international standards to combat money laundering and terrorist financing तो किसी स्टैंडर्ड्स से माने सेट करूचंदी मेजर्स करूचंदी सो दैट जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग होची ताको कवर करा जाई परिबो एंड FATF रिकमेंडेशन थ्रू पीयर रिव्यूज यानी कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन ओके दैट मींस सिंपली आपण कहि परिबे जेंती पीयर रिव्यूज यानी कि गोटे कंट्री आउट कंट्री रो परफॉर्मेंस को भी से माने
review kari parandi and they can suggest. Identify high risk jurisdiction and support countermeasures. High risk jurisdiction in the sense, for example, ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛେ ଟେରର ଫାଇନାନ୍ସିଂ କରୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛେ ସୋ ଇଟ୍ସ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ FATF ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଅର୍ ଟୁ ତାର ଜେନ୍ୟୁଇନନେସ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ମନିଟର କରିବା work with the UN, IMF, World Bank, Egmont Group and others to fight global financial crime. Function देखिए recommendation 40 updated guidelines latest 2012 amended regularly in case of terror financing and money laundering compliance. Mutual evaluation report assess member countries effectiveness. Grey list गोटे अच्छी grey list jurisdictions under increased monitoring. Countries with deficiencies but committed to working with FATF plus हमें ग्रे लिस्ट रे कौन कौचे ना ताको मॉनिटर करा जाउची कि एक्चुअली मूवमेंट ही देखिबा ब्लैक माने इट हैज बीन प्रूव्ड दैट दिस कंट्री हैज बीन इन्वॉल्वड इन द टेरर फाइनेंसिंग countries with serious deficiencies and no commitment to address them that means ସେମାନେ money laundering plus terror financing भी करोचन typologies report identify emerging money laundering and terror financing method crypto misuse digital terror financing etc. Importance for India is a full member. Okay, strengthens India's global credibility. That means हमें ना terror financing करूचे ना money laundering करूचे. Okay, supports India's demand for UN reform and stronger action against terror finance havens. Okay. Next देखिए ECI Election Commission of India. The Election Commission of India does not have unfettered और अनलिमिटेड पावर कहीं कहुच्छी ना बर्तमान जेहेतु बिहार इलेक्शन अच्छी तो से बिहार जो इलेक्टोरल रोल अच्छी यानी कि इलेक्टोरल लिस्ट जो अच्छी से कहते टोटल 8 करोड़ वोटर्स जो अच्छा 4 करोड्स मानकर आइडेंटिफाई करागला फाइनालाइज करागला से 4 करोड्स दे आर नाउ डिप्राइव्ड फ्रॉम द वोटर लिस्ट एंड दे हैव बीन आस्क्ड टू सबमिट द डिटेल ऑथेंटिक सर्टिफिकेट for example semanakar residential certificate semanku proof dikhebaku padibo they are the resident of Bihar now although other the opposition party they have asked ki they can use Aadhaar or they can use other such government ID cards तो election commission ताको strictly मना कर दीजिए कहला कि नहीं अपन को residence certificate ही produce करबाको पड़िबो now question is जेहेतु आपण देखिबे बिहार रो काफी migrants माने थांती they are staying not staying in Bihar, they are staying other cities, other states. So they have to come back to the state and produce before the election commission's representative to prove they are the resident of that area. तो ये काफी hectic रहेबो तो definitely voter कोठी ना कोठी वंचित यानी कि they will be deprived from their voting rights. जो कि PILV फाइल करा जाइतला से इलेक्शन कमिशन रो रोल को क्रिटिसाइज करा जाउची द सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैज बीन रेज्ड considerable is defined regulated and limited by the constitution judicial interpretation and statutory law तो से कहा जाउची ECI does not have unlimited power so why the ECI does not have unfettered unlimited power first one is the constitutional boundaries article 324 grants ECI the power of superintendent direction and control of election but these powers are subject to laws made by the parliament तेणु से जहाँ भी 324 अंडर रे करिवो से गुडिक पार्लियामेंट द्वारा डिफाइन होवा दरकार पार्लियामेंट ताको आइडेंटिफाई करिवा दरकार पार्लियामेंट लॉ थ्रू रे ताको recognize करिवा दरकार ECI is expected to function within the constitutional framework it cannot violate the constitution second is the judicial interpretation supreme court in Mohinder Singh Gill 1978 रे ECI not just an administrative body but has quasi judicial body that means it has the civil power okay yet must act within the law civil power तो अच्छी but से law अनुसार ही करिवो जहाँ law कहूची they have to compliance with that Subramaniam Balaji versus Tamil Nadu 2013 सेठी कौन कहा जाउची ECI cannot regulate promises made in election manifestos unless parliament gives it that the power okay that means पार्लियामेंट जो पावर तक न देची से ता ऊपर एक्ट करि परिबो नाही इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ECI's directions are not absolute must be reasonable fair and subject to review that means that is the reason the PIL has been fined on this direction of the election commission of India although election commission of India has given the clarity or clarification our stand has not been changed we are stick to
that our previous stand की समस्त को निजर आईडी प्रूफ या जो हमने कहना परिचय प्रमाण परिचय सेटा ही अपन को प्रोड्यूस करि पारबो पड़िबो इनफैक्ट द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दैट इट प्रूव्स दैट यू आर द रेसिडेंट ऑफ बिहार तेणु अपन को वोटिंग लिस्ट नाटी रहइबो सो पीआईएल जेतु फाइल करा जाइछि सुप्रीम कोर्ट रे तो आई थिंक जुलाई 19th बोधे डेट अच्छी जोठी कि आमे जानि परिबा एक्जेक्टली कोन होउछि लिमिटेशंस देखिबा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया जो पावर गुडी को अछि ताको केमति जेमति मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ओके दैट मीन्स इट्स अ लिमिटेशन ऑन द ईसीआई पावर इट इज अ मोरल कोड आपण दी वायोलेट न करूचंदी लीगल एक्शन किछि नाही ओनली गोटे काइंड ऑफ इलेक्शन कमिशन कौन करिवो गोटे दिन पाए आपण को प्रचार को जीवाकू से मना करि पारे रेस्ट्रिक्शन लगेई पारे 2 दिन पाए आपण प्रचार को जाई ई टाइप रो जिंस हबो अदरवाइज देयर इज नो सच लीगल बाइंडिंग ऑफ दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट violations cannot be prosecuted unless it overlap with law hate speech etc disqualification ECI only recommend disqualification to the president and governor final decision lies with the executive तेणु प्रेसिडेंट और गवर्नर केस रे डिस्क्वालिफिकेशन हेई पारे बट फर्दर एटा को एग्जीक्यूटिव पुनी ताको ओवर एग्जामिन करिवे पार्टी सिंबल्स allocated under election symbols reservation and allotment order 1968 it's a statutory framework so आको बाध्य पार्टी सिंबल्स allocate करिवा एंड एठी भी से कोनोसे डिस्क्रिशन यूज करि परिबो नाही they have to compliance with the law expenditure monitoring limited reporting violation cannot prosecute candidates directly आपण देखितबे कितने कैंडिडेट अच्छे जो मैंने एक्चुअली एसीआई रूल्स को फॉलो कर रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर राइट तो ऑब्वियसली से जगह इलेक्शन कमीशन नो इज इट्स इन द पब्लिक डोमेन बट इलेक्शन कमीशन कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट दैट so this is what the limitation or the restriction on the election commission of India's power checks on the ECI's power judicial review can be done by the High Court and Supreme Court RT Act ensures transparency in appointment and order okay media and civil society often scrutinizes the MCC enforcement that is model code of conduct president parliament oversight in certain decisions like disqualification of MPs and MLAs okay next देखिबा Hornbill rare great Hornbill sighting in the Izimala parks renewed calls for biodiversity conservation a rare sighting of the great Hornbill in the Izimala region of Kerala has sparked excitement among ornithologists and conservationists as well as renewed calls for strengthening biodiversity protection in the Western Ghat. Great Hornbill. About the Great Hornbill, देखिए IUCN status vulnerable habitat dense forest in the Western Ghat, northeastern India and northeast Asia. मैं आपन को पे ଗୋଟେ क्वेश्चन रखी छी ये हॉर्नबिल फेस्टिवल गोटे सेलिब्रेट करा जाए को स्टेट रे सेटा को आंसर करिवे कमेंट सेक्शन में इन व्हिच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल is organized okay ecological role देखिए keystone species crucial for the seed dispersal especially of large fruiting trees like figs keystone species माने कोन जेमति आपण देखिए गोटे इकोसिस्टम रे किछि स्पीसीज थिबे and they are the key to that ecosystem I mean very significant to that ecosystem सेटा हम keystone species बोली कहू threats कोन na habitat loss due to anthropogenic intervention deforestation again by the human being hunting for cashew bill and fragmentation of the forest corridor एवं poaching hunting ये सब भी चली जेहेतु threat हमको देखिबा को मिलुची why the sighting matters unusual location ये जो आपनकर western घाट रे देखिबा को मिलला that is unusual location this suggests possible shift in the habitat why ना क्लाइमेट चेंज पाई ही तई पारे नॉर्थ ईस्ट रू से माने मूव करिकी वेस्टर्न घाट रे पहुंचनी फ्रैगमेंटेशन लॉस ऑफ कोर फॉरेस्ट एरियाज सीकिंग न्यू ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड्स ओके से माने खोजु थाई पारंत कि भाई हमें नुवा जगह से माने फाइंड आउट करू थाई पारंत नागालैंड ओके इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ सो इंडिकेटर स्पीसीज भी को जेमते बटरफ्लाई प्रजापति को हमें इंडिकेटर स्पीसीज बोली को अपन दी अर्बन जो पोल्यूटेड अर्बन एरिया रे यू ओन फाइंड बटरफ्लाई अपन को देखिबा को मिलिबो नाही कारण से माने होचंदी इंडिकेटर जोठी पोल्यूशन थिबो सेटू से पळेबे जोठी क्लीन एयर थिबो सेठी अपन प्रजापति यानी कि बटरफ्लाई को अपन को देखिबा को मिलिबो प्रेजेंस ऑफ हॉर्नबिल्स जनरली रिफ्लेक्ट्स ए हेल्दी मैच्योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम their sighting indicates that the area may still hold important ecological value conservation opportunity the shifting
sorry, the citing underlines the need to preserve microhabitats and forest patches that are often overlooked in conservation planning. Okay, so obviously conservation measures amaku nabaku padibo to protect this kind of vulnerable species. Conservation concern rapid urbanization infrastructure projects in the Western Ghat region. Hornbills need large nesting trees. तो से बड़ी बाबरे dense जो canopy जहाँ रा बड़ा थी वो से बड़ी मिलेगा कष्ट. Undisturbed forest canopies both increasingly scarce यानी कि धीरे-धीरे decrease ही जाऊँची से उनका numbers. Poaching for ornamental use of their cassic still persist in some areas. Okay. Next देखिए Indo-US trade deal. Trump extends deadline to August 9. First कौन थिला July 9. Sorry, August 1. First थिला July 9. Now this has been extended to 1st of August. The US has delayed reciprocal tariff originally set for July 9 to August 1, signaling space for a deal beyond July 9. That means जो consistently they are demanding कि if you do not finalize within 9th July, then अपन को ऊपर reciprocal tariff will be imposed. So that has been extended to 1st of August. It described as an outer limit, not a firm deadline, but reflects sustained negotiation pressure. Okay. Progress on a mini trade deal. President Trump has publicly said a deal with India is very close and that latest outlining tariffs to others are being issued. So interim goods only agreement excluding sensitive areas like dairy and agriculture. तो प्रथमे समाने जो mini trade होची ना जो जगह से मानक नेगोशिएशन हेई पारुने फॉर एग्जांपल डेयरी सेक्टर आमे डिस्कस करथिले डेयरी सेक्टर रे कोन प्रॉब्लम होची ना से माने कहउचंदी कि हमें डेयरी सेक्टर रे हमको मार्केट एक्सेस दिया जो इंडिया इज सेइंग डेयरी सेक्टर वी आर सेल्फ सफिशिएंट I mean a lot of women or cooperative sector has been involved in the dairy sector. We cannot give you the access. Number one. Number two, in terms of religion or faith also dairy sector को हमें access दून कहेंगे US जेमती हमें कौन कुछ काउ मिल्क या कैटल मिल्क आमे प्रोड्यूस करूचे बट सेमाने कैटल रु तो मिल्क प्रोड्यूस करूचे नहीं प्लस जो कैटल मानकर रेसिडुअल्स जेमती बोन फैट एठो भी जो मिल्क प्रोड्यूस करूचंदी से मिल्क गुडको जनरली सेटा कोन हिजबो नॉन वेज कैटेगरी रे आसीबो सो से मिल्क को आमे एठी बिकी परिबो नाही ओके तो ये भी गोटे फैक्टर जोथि पाई के रेस्ट्रिक्शन अछि सेति पाई कोआ जाउची दोज एरियाज जो जगह नेगोशिएशन चाली छी हेई पारो नाही दैट विल बी केप्ट फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ नेगोशिएशन लेट्स गो फॉर दिस मिनी ट्रेड डील और व्हाट वी कॉल द इंटरिम goods को first finalize करिबा and then we'll close the deal then further negotiate for the long term deal. India sets red line. India firmly rejects opening of dairy and agriculture sector. In fact agriculture sector है जोटा genetically modified crops because officially in India genetically modified crops are not consumed. Okay, so that is the reason we are not allowing this GM crops and milk products mu jo jinse abe discuss koruthile apan ko sahita. India reportedly proposed limited tariff rate quotas for US cars and EVs in exchange for relief from the 26% reciprocal tariff. Okay, तो India भी कौन कोर्ची proposed limited rate quotas, tariff rate quotas in fact. तो India भी कोची भाई retaliatory tariff हमें भी impose करिबो जदि US कमेला tariff को हमें भी कम करिबो किछि problem नहीं. Key consideration: cautious negotiation. India's stance: a deal cannot be rushed or made under pressure. तो जो डेडलाइन अनुसार हमें डील को फाइनलाइज करि परिबो नै. दिस इज द इंडिया स्टैंस. दैट इज द रीजन द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड फर्दर. Outcome may come as an interim deal on goods soon with sensitive areas defer to latter. तो sensitive areas in the sense कि GM crops हो and dairy sector हो that will be kept for the later. Economic impact कौन देखो तो person tariff offers short term relief for Indian exporters, especially in textile and labor intensive sector. Okay. तो आमे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करिबा को चाहू जे एक्सपोर्ट ऊपर यूएस टैरिफ इंपोज करिवो obviously हमर जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री अछि that will be hampered. But Trump's unpredictability means long term strategizing is necessary. Trump is too much unpredictable. Okay, Trump's mood is more unpredictable than the weather condition. तो सेति पई हमको गोटे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बाहर करिबा को पड़िबो. ग्लोबल ट्रेड कॉन्टेक्स्ट रे देखिबे द नेगोशिएशंस आर पार्ट ऑफ द ब्रॉडर यूएस स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंट्रीज बिफोर 1st of August. एबे देखिए बांग्लादेश ऊपर 30%,
I think some tariff impose korichନ୍ତି. India missed the earlier list of tariff hits but remains under pressure to deliver the results. So by 1st of August, we'll have a particular deal. Odisha star Vibhuti Patel signs with gold in national mini fencing. Vibhuti Patel, an athletic from Odisha, clinched the gold medal in the national mini fencing championship. Okay, highlighting Odisha's rising stature in niche sports. So it's a fencing association of India and saw participation from several states, making her victory at national level recognition. Man rakhte hue Vibhuti Patel gold medal in the national mini fencing championship. Okay. Odisha government moves to promote urban rooftop gardening to compensate loss of green spaces. So Odisha Urban Development Department is launching a program to encourage rooftop gardening in cities like Bhubaneswar, Cuttack, Rourkela, so that जोटा कि जो pollution हमर होची deforestation पे हमें rooftop gardening through रे सेटा को compensate करि परबा. That is the only case. So government may offer financial subsidies and seed kits and training through horticulture and municipal departments. Okay, तो सही जिनसे water conservation, integration, food security, nutritional security, smart city synergy, public engagement ये सब भी करा जाई पारियो. Only Odisha clocks over 14% annual growth in the first 8 years of GST. Odisha is the only Indian state to achieve over 14% annual GST growth from 17 to 25, surpassing richer industrial states. While GST compensation scheme guarantees 14% growth until 2022, Odisha achieved it even after the end of compensation. तेणु ये होची गोटिए स्टेट आपण देखि परिबे जे अचीव करिछि 14% annual GST growth. Okay. Odisha government to roll out Rahabir like hike reward for saving lives to 25,000. जदि आपण accidental कोनोसी पर्सन को immediately hospitalize या hospital ले पहुंचुचंदी, that means you are saving the life, तबे definitely आपण को reward दिया जिवो. Good Samaritans and Rahabir saman को कुआ जाउची Rahabir scheme रे, recognizing citizen who assist road accident victims. आगुरु हमें छाड़ी के पढ़ौथले because of the police case and all, but now if you save then you will be rewarded. Okay, this is what the scheme is all about. Golden hour delays हेले fatality होउची, तेणु सेटा को immediate action नवा को पड़ियो. MCQs को solve करन दो फटाफट. आंसर कौन हो? First, right? 5,000 to 25,000 अच्छे, 2,000 to 25,000. Second देखो दो. GST. First ठीक अच्छी. Major contributor Odisha GST growth कोटा mining, not agriculture, mining. Okay, तो आंसर ही जो वन ओनली. रूफटॉप गार्डनिंग इनिशिएटिव एक्सक्लूसिवली नुहे, सबू हाउस होल्ड बिल्डिंग रे भी रहिबो. अगेन वन ओनली, हाउस होल्ड बिल्डिंग रे भी रहिबो. स्मार्ट सिटीज. नेक्स्ट देखंतु मिनी फेंसिंग चैंपियनशिप. एटा होची आपनकर अंडर 12 कैटेगरी. विभूति पटेल अंडर 12 कैटेगरी. सो एटा इनकरेक्ट, एटा होची करेक्ट. सो 2 ओनली आंसर. ओके, खेलो इंडिया इनिशिएटिव. सो ये होची मेंस रो क्वेश्चन देखिनि हंतो. अगेन इलेक्शन कमीशन को नहीं की एंड ग्रेट हॉर्नबिल. ओके फाइन. तो 7 जुलाई रे हमर बैच ऑलरेडी स्टार्ट ही छी. 15 जुलाई पर्यंत एडमिशन डेट अछि. जो मैंने एक्चुअली जेन्युइनली प्रिपेयर करबा को चाहूचंदी पूरा गोटे कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न रे, प्रिलिम्स एंड मेंस कंबाइंड वे रे टिल इंटरव्यू अपन को स्टडी की तरफ गाइडेंस दिया जीवो. हमर लास्ट जो 22 रे हमर जो स्टूडेंट्स माने थिले समन को कंप्लीट इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन करबा पई दिया जाइथिला अपॉर्चुनिटीज. तेनु लाइव क्लासेस रहइबो, कंप्लीट नोट्स अपन को रहइबो, रेगुलर टेस्ट अपन को अछि, एसे एनरिचमेंट सेशन रहइबो, ओडिसा स्पेशल क्लास रहइबो, सी सेट अपन को मिलिबो.
सब जिनस गोटे प्लेटफॉर्म आपन को प्रोवाइड करूची 12 प्लस टेस्ट आपन को फ्रीली दिया जिवो ओके तेणु काफी अफोर्डेबल प्राइस जदि आपन देखिबे एंड एटा होची कंप्लीट प्रिपरेशन प्री प्लस मेंस रो ओके 1 ईयर रो पूरा ऑलमोस्ट रहइबो 1000 प्लस आवर्स रो लाइव क्लासेस कारण जुलाई रो जुलाई गोटे वर्ष पूरा अच्छी आपण पाखे का नेक्स्ट ईयर प्रिलिम्स जो सेटा जुलाई रे ही कंडक्ट करा जिवो यूज करिवे जेएन लाइफ कोड को मैक्सिमम डिस्काउंट पाई एवं 15 पर्यंत तार एडमिशन अच्छी 15th ऑफ जुलाई पर्यंत तार एडमिशन अच्छी मन रखते ओके पीडीएफ आपन को टेलीग्राम रे मिल जिवो बाकी जदि किछि क्वेरी थिवो डाउट थिवो मते आपन इजीली रीच आउट करि परिबे पचारि परिबे सो सस्मिता इसी बारंबार इसीआई बारंबार न्यूज रे आसुची ठीक अच्छे आपन डिफरेंट डायमेंशन रो लेखिक ताकू रखंतु किछि प्रॉब्लम नाही इट्स गुड फॉर यू गुड फॉर एवरीवन देखो करंट अफेयर्स को नोट्स बनैबा नोट्स मु आपन को कहि छि केमती बनैबा कथा मु आपन को पेड क्लास रे भी कहि छि बट स्टिल मु आपन को कहूची जति की पीडीएफ आपन को मिलुची डेली बेसिस रे सेटा को ऑल्दो काफी फिल्टर हे की कंटेंट आपन को मिलुची से फिल्टर कंटेंट को भी आहुरी फिल्टर आपन करि परिबे गोटे गोटे कीवर्ड रे राइट गोटे गोटे कीवर्ड रे आहुरी फिल्टर करि परिबे तो चेष्टा करंतु करिवा पई सस्मिता निश्चिंत करियबो किछि प्रॉब्लम नाही ओके